Hi everyone, this is Dr. Anshul Tayal and I am MDS Endo from GDC Kolkata. I'm both a former ranker and a current ranker. So I was 104 in NEET 2018 and 526 in NEET 2024. Also, I was 25 in AIMS November 2017. Apart from that, I have also qualified various written stages of various PSC exams, notably the HPPSC, Haryana PSC, right, and Gujarat PSC, and also AIMS SR, the written stage. So today I will be taking a webinar on how to get started in your journey for NEET for those preparing for NEET 2025. This is a three-parter webinar. The first part is available to you on YouTube. The second part, the date has not been decided as of yet. It will be taken, however, it will be a live only. The link will be given in my group. So I run a free MCQ group, recapitulation, right? I'm a mentor over there. I post questions. Apart from that, I always try to motivate the students by sending various I try to motivate the students because I know studying for NEET sometimes can be very depressing and challenging. And I also have a test series over there, which was quite successful last time, right? So the link will be posted in my group. Those who have not joined, I'll be giving the link in the description of this video to join. Okay. So without further ado, let's start. In this part, I'll be covering why to study. Is MDS actually necessary? And if it is necessary, is government MDS necessary? What to study? पल सबको पता है, but is पल sufficient? And MCQ versus theory, a lot of confusion is there. Then how to study, the number of hours and effective techniques, and I'll be introducing my own series, the details and the benefits of it. Second part is informal one. I'll be talking about very important questions, right? So it will be informal. So I won't put a recording because I want to talk more as a friend rather than a teacher. I'll be talking whether you should drop or you should not drop. For ranks 400 to 700, those who are confused कि अब क्या करें, नॉन क्लिनिकल मिल जाएगी बट क्लिनिकल चाहिए, academy versus self study. ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग और प्रेजिंग एनी अकेडमी, मेरा किसी से कोई एसोसिएशन नहीं है. आई एम मोस्टली सेल्फ स्टडीड बट आई हैड अ लॉट ऑफ गाइडेंस. ठीक है, दैट आई टेल यू. आई टुक 2 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज. ठीक है, तो दैट आई टेल यू मेरा पर्सपेक्टिव क्या है एंड व्हाट स्टूडेंट शुड डू, राइट. वर्किंग वर्सेस नॉन वर्किंग, सम स्टूडेंट्स हैव क्लिनिक्स, दे जॉइन, दे डू ऑड जॉब्स, दे आर लाइक कि कुछ तो करेंगे, घर पे कैसे खाली बैठे. दैट आई टेल यू. Battling depression again, कि 1 year long journey है, face many ups and downs, personal level maybe professional भी, what to do, and the errors made by me in the preparation. ठीक है, this is I'm talking about 2018. ठीक है, and what are the lessons which I derived from it and they still hold true. Now, why to study? Is MDS necessary? Why does someone wants to do MDS? Some say they want this tag. Some say it helps them in jobs. Some say it helps them in running clinic. See, for me, tag, I don't think it's important. Patients nowadays come due to mouth publicity, or whether then matlab, they are your known, or like just because of your good reputation. Jobs, see, PSC jobs जो होते हैं, eligibility is BDS. MDS do not get much of an extra edge. Okay, and that is the thing. Then clinic. See, if you say कि tag will help you better run in the clinic, again, I have to disagree a bit, right? Because again, patients are very selective of our field nowadays. Okay, but if you say you want to acquire sales that run a clinic, definitely yes. Many people can say sir 5-6 महीने कहीं भी charitable में काम करके आ जाता है. So the thing is, when you are a postgraduate, you do extensive work, you do follow-ups, plus you know what is right and what is wrong because you develop in dwell in the theory. Sometimes many people have very flawed concepts, right? This is not to say a PG will have perfect concepts. कई बार PG के बाद also you learn a lot in the practical life, right? But then again, if you are devoting 3 years to one subject, तो कुछ तो बात होगी definitely, है ना? कुछ तो different होगा. Second reason can be that you want that stipend.
गवर्नमेंट में 40,000 to 1.1 lakhs का रहता है. दिस इज लाइक माय कॉलेज RADC में आई थिंक 40-45 चल रहा है. ठीक है, गुवाहाटी में आई थिंक 30, मतलब जो है अराउंड 40 यू कैन से. 1.1 लाख इज इन मेट्स. तो यू कैन से सर 3 years तो हम सेटल हो गए कम से कम. अलॉन्ग विद दैट हमें टैग भी मिल रहा है. वी आर गेटिंग दो स्किल्स ऑल्सो, वी आर गेटिंग अ डिग्री ऑल्सो, वी आर गेटिंग नॉलेज ऑल्सो. दिस वॉज माई रीजन वेरी फ्रेंकली. ठीक है, सो वट एवर दीज आर योर रीजन्स. ठीक है, इफ यू आर लाइक हमें नहीं पढ़ना, क्लिनिक करना, दैट इज ऑल्सो गुड. आई माई सेल्फ आफ्टर MDS ऑल्सो आई वर्कड अंडर मेनी अंडर ग्रेजुएट्स. Like undergraduates, I mean many senior dentists who are graduates, sorry, not undergraduates. Okay, they were 20-25 years senior. Wonderful work. They teach me a lot of things no college can teach you. Apart from that, non-clinical options, I will always say do search them. I regret not searching them. Pharmacovigilance, very good job opportunity, and they prefer freshers. I tried to search recently, but I was dubbed overqualified. ठीक है, and कई जगह एज का फैक्टर आ जाता है. As soon as you turn 30, I am just now 30. I am. ठीक है, तो 30 years and 3-4 months, तो like it goes against you. They want under 30 plus it gets difficult. ठीक है, with like family is there, वो एज हो जाती है, एंड लाइक फिर वो मैरिज की भी बातें अब होने लग रही है. ठीक है, लेट ही हो गया वैसे तो. So again, the same thing, right? Medical coding jobs are there. I'm not aware of it, but many of my colleagues did it. Government insurance officer, there are organizations like NIAOCL. Claims officer बहुत अच्छी पोस्ट होती है. ठीक है, ये आई एम नॉट सेलिंग, वो जो इंश्योरेंस बेचते हैं डोर टू डोर, वो नहीं कह रहा हूँ. ठीक है, गुड पोस्ट, यू कैन लुक इनटू इट. ठीक है, अगेन आई हैव नो नॉलेज एंड दिस अगेन वो 30 years का था. लाइक द एलिजिबिलिटी इज 30 years, तो आई डिड नॉट सर्च मच. SSC. ठीक है, तो SSC से अगेन इनकम टैक्स ऑफिसर एक्सेट्रा लगते हैं. ठीक है, बैंक्स में लग सकते हैं, अच्छी पोस्ट है. अगेन एलिजिबिलिटी इज 28 years. मैं जिस दिन 28 का हुआ 2 साल पहले, तब मुझे पता चला. अगेन राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर. एंड लास्टली योर स्किल. देर आर मेनी म्यूजिशियंस अमंगस्ट अस. कोई शायर हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, वट एवर इट इज. if you can monetize your skill nowadays, anything can be monetized. यही हो रहा है ना, डॉक्टर्स तो कहाँ कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम के रील वाले कमा रहे हैं. तो ठीक है, तो लाइक यू कैन मोनेटाइज योर स्किल, और कुछ नहीं तो यू कैन डू इट एज अ पार्ट टाइम हॉबी. आई फॉर एग्जांपल राइट. ठीक है, शायरी सेक्टर, तो आई डू इट एज अ हॉबी. ठीक है, मोनेटाइज नहीं करता, बट अगेन इफ यू वांट यू कैन डेफिनेटली डू दैट. So is government MDS necessary? Not at all. There are many private colleges which are better than government colleges. अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत अच्छी फैकल्टी होती है. तो गवर्नमेंट MDS के पीछे सब क्यों पड़े? बेसिक इज फाइनेंसेस. प्राइवेट कॉलेज में 30 lakhs के आसपास 25 to 30 विल बी योर एक्सपेंस. ठीक है, मिनिमम 20 तो है. व्हाट विल हैपन इज दैट 20 lakhs ये, एंड गवर्नमेंट में मिनिमम 15 lakhs कमा रहे हो. दिस इज द मिनिमम. ठीक है, तो मतलब ये 40 तक भी जाता है अगर मेड्स में कर रहे हो. एंड ये जो है गुड कॉलेजेस में 50-60 lakhs तक भी जाता है. तो 50 lakhs to 1 crore is a huge sum to invest, huge sum for a middle class family when you will start returning it. Is the preparation necessary? If you say sir मेरी family में finances का issue नहीं है, preparation is absolutely necessary. First of all, if you want to go to a good college, private college also like SDM या SGRD हो गया पंजाब में, CDC, they also take very high ranks only, under 2000 ही जाता है. ठीक है, एंड कई प्राइवेट कॉलेजेस है, दे हैव गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीट्स, वहाँ पे फीस इज लाइक 1.5 lakhs. दिस आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन, वेरी फ्रैंकली. अगर किसी को ये मिल रहा है, आई डोंट थिंक लाइक इससे लाइक BDS इससे महंगी हुई होगी. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. दे ऑल्सो टेक अंडर 1000 ranks या 1500. प्रिपरेशन इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड. And any college you want to go to, you have to like achieve a certain score. दो नीट वाले गिरा देते हैं, but again दो कॉलेज will take, अगर 10,000 रैंक है और किसी 6,000 वाले ने सीट लिया तो उसको ही सीट मिलेगी. Now how to study? So first of all, the thing is, the biggest mistake I see students making, they are not willing to spend on necessities. They are always looking for PDFs. Telegram पे प्लीज previous year PDF दे दो, ये दे दो, वो दे दो.
You want to go to a college which is giving you 15 lakhs in 3 years, या you want to go to a college where you are spending 50 lakhs? 10,000 की बुक्स के लिए 10,000 मैथ्स, ठीक है, बुक्स की बात कर रहा हूँ मैं, अकेडमी की तो कर भी नहीं रहा, इसके लिए यू गाइज आर सेइंग इट इज टू एक्सपेंसिव. आई हैव नेवर सीन अ पेरेंट्स सेइंग टू देयर चाइल्ड कि ये लाइक हम तुझे बुक खरीद के नहीं देंगे. आई माई सेल्फ स्पेंड 50,000 इन माई ड्रॉप ईयर, ठीक है. हाँ, और लास्ट में हो गया था, पेरेंट्स कह रहे थे कितनी बुक पड़ेगा, ठीक है, बट दे नेवर रिफ्यूज, ठीक है. एंड एटलीस्ट बेसिक के लिए नो वन विल रिफ्यूज, ठीक है. इसमें बुक्स थी, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा थी, बट बुक्स मैंने बहुत सारी ली. अब आई विल टेल यू बट विच बुक्स टू बाय, ठीक है, सारी नहीं खरीदनी है, राइट. सो यू विल, व्हाट विल हैपन इज, टेलीग्राम में पहले तो एक सबसे मिलते करोगे, 1-2 महीना वेस्ट करोगे, फिर कोई एडिशन मिलेगा, स्कैन बकवास होगा, एंड पुराना एडिशन होगा, ठीक है. नए एडिशन टेलीग्राम पे कॉपीराइट होते हैं बहुत तगड़े, सारे ऑथर्स सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे एडेड है, 1 मिनट में लीगल नोटिस भेज देंगे, ठीक है. तो ये मैं वेरी फ्रेंकली बता दूँ, तो डोंट गो इनटू दैट, राइट. अगर किसी पे 15th एडिशन है पल्स का, ही से सर 16th के लिए नई बुक नहीं खरीद सकता, दैट आई अंडरस्टैंड, ठीक है. बट अगर एक भी नहीं है तो फिर लाइक आई थिंक दैट यू आर जस्ट मेकिंग अ fool of yourself and not respecting what is required to study in this. You are not serious enough, very frankly. What are the books? Pulse, everyone knows, Bible of preparation, collection of 25 to 30 years, needs to be done thoroughly. That is incompletely, it has to be done. ऐसा कोई पेज नहीं होना चाहिए you have not read, ठीक है. आई एम टॉकिंग मोर इन टर्म्स ऑफ GDCs या लाइक हाउ टू गेट अ रैंक अंडर 2500, ठीक है. सो मैं उसी टर्म्स में बोल रहा हूँ. नीरज वाधवन, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट बुक अराउंड एंड आइडियल फॉर AIPG, क्योंकि इसमें AIPG के क्वेश्चंस हैं, ठीक है. पल्स का जैसे 16th एडिशन अभी चल रहा है, नीरज वाधवन का 6 चल रहा है अभी. तो नीरज वाधवन पहले 2001 ऑनवर्ड्स आती थी. इफ यू कैन प्रोक्योर दिस, गेट दिस 6th एडिशन, आई थिंक 2016 ऑनवर्ड्स ही है. तो ठीक है, आई थिंक इट इज अ मिस्टेक इफ यू फोकस ऑन लास्ट 6 to 7 years. नीट 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन 2001 to 2007 में आए थे. आई एम वेरी प्राउड टू से आई ट्रेन्ड ऑल, मतलब ट्रेन तो नहीं बोलूंगा, बट आई टोल्ड ऑल माय स्टूडेंट्स एंड आई टुक टेस्ट ऑफ 2001 to 7 एंड मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट केम. ये तो एग्जाम मैंने पर्सनली गिवन, मैंने खुद ही दिया है, तो इट्स नॉट कि आई एम हियरिंग एनीथिंग, आई पर्सनली सॉ दैट एंड आई डिड नॉट हैव इवन 1 minute टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. मेरे जो प्रीवियस मैंने जो पढ़ रखा था, या बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते लाइक जो रिकैपिचुलेट होता था उसी के थ्रू हुआ है. सो द सेम थिंग, ठीक है. तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. लास्टली यू हैव डेंटल ट्रिपलेट. तो इट इज अ गुड कलेक्शन ऑफ रिसेंट पेपर्स. इसमें 2017 ऑनवर्ड सारे पेपर है, AIPG, MO एंड योर लाइक INICET, ठीक है. So you have to do question answer and explanations of all books. So the question comes, जब पल्स में सारा है तो ये दोनों क्यों चाहिए? इनमें है एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशंस. इनकी एक्सप्लेनेशन कर लोगे तो 80 to 90% ऑफ द थ्योरी इज कवर्ड. दैट्स व्हाई यू नीड देम. बच्चे सिर्फ पल्स करते रह जाते हैं. आइदर यू डू पल्स 10 times, या फिर मैं यही कहूंगा इन दोनों की पढ़ोगे, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है और एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन है. क्वेश्चन फिर भी थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, एक्सप्लेनेशन इज हार्डली, मतलब 99% सही ही होती है, ठीक है. तो मतलब यू नीड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. थ्योरी इसी से ही होती है. अगेन, एरर्स इन MCQ बुक्स, सी ऑल बुक्स हैव एरर्स एंड एरर रेट इज लेस देन 5%. 5% का मतलब पता है कि अगर 20,000 पल्स में क्वेश्चन है, दैट मीन्स 1000 क्वेश्चन गलत है. 1000 गलत नहीं है पल्स में, ठीक है. एंड अगर है भी, इफ यू गिव एन एग्जाम 95% एक्यूरेसी से ना, यू विल टॉप एनी एग्जाम. 95% एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि अगर 240 क्वेश्चंस है, 228 आर राइट, 12 गलत भी है ना, तो कितना हो गया, योर स्कोर इज स्टिल 225, ठीक है. तो -1/4 लगा के 225 का स्कोर इंटू 900 मार्क्स यू आर गेटिंग, ठीक है. 900 मार्क्स यू आर गेटिंग. इस साल जो टॉप की है, दोनों दो डॉग साहब जो ट्विंस है, ठीक है, उनकी 772 है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, इन केस समहाउ यू आर सीइंग दिस वीडियो, एंड हैट्स ऑफ, ठीक है.
तो लाइक मतलब 900 में तो क्या कहते हैं, 2 लड़के पास हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो अगेन, डोंट मेक अ ह्यू एंड क्राई, यू फाइंड द एरर, सिंपली करेक्टेड, मूव फॉरवर्ड। Now MCQ books versus the standard books. See, whenever the controversial question comes now, the thing is that these MCQ books, they are memory based books, and the authors will always put a disclaimer. Okay, and they always give a reference. For example, if the question is like it is something else given in Orbans, yeah, it is something else given in Pulse Varvan and Triplet, ऑर्बन्स मानी जाएगी, वो नहीं मानी जाएंगी, और उनके ही ऑथर्स आपको बोलेंगे फॉलो ऑर्बन्स, वील करेक्टेड इन नेक्स्ट एडिशन। ये फैक्ट की बात है, ठीक है, बिकॉज आई बीन क्लोजली रिलेटेड विद दिस। एंड कभी भी दो बुक्स में कंट्रोवर्सी मिले, सो द थिंग इज की लाइक अगेन, वो यू हैव टू गो टू योर स्टैंडर्ड बुक्स, एंड दैट्स व्हाई रेफरेंसेस आर गिवन। ठीक है, एग्जांपल, देयर इज अ क्वेश्चन आई थिंक इन 2019, वो हाईएस्ट स्लोप ऑफ, मतलब हाईएस्ट स्लोप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की किसकी है। ठीक है, वन बुक, अब आई डोंट वांट टू बैश एनी बुक, ठीक है, वन बुक में सिरामिक गिवन है, वन बुक में गोल्ड गिवन है, क्रैक का रेफरेंस है, क्रैक का रेफरेंस चेक करोगे तो गोल्ड इज द आंसर। ठीक है, क्रैक मानी जाती है। तो वाई बुक ए इज रॉन्ग एंड वाई बुक बी इज करेक्ट, बिकॉज बी ने जो रेफरेंस दिया है क्रैक का, ए ने भी वही दिया है, बट शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, तो बी इज राइट बिकॉज दैट रेफरेंस इज राइट। ठीक है, रेफरेंस की कीमत है। स्टेट पीएससी में जब करेक्ट करते हो ना आंसर कीज, दे आस्क यू टू करेक्ट, इफ यू कैन गिव एन एविडेंस, यू गिव एविडेंस ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, उस पे नहीं चलते हो कि पल्स में ये लिखा है, या कई बच्चे होते हैं कि हमें क्लास में ये पढ़ाया गया, कोई उसकी कीमत नहीं होती है। रिटन एविडेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक। एमसीक्यू वर्सेस थ्योरी। ठीक है, सी एमसीक्यू एग्जाम इज, इट इज अ एमसीक्यू एग्जाम, नॉट वाइवा, नॉट अ थ्योरी एग्जाम। यू नीड टू नो द एमसीक्यूज। बेकार चीज है, नॉलेज होनी चाहिए वो, मतलब आई एम नॉट थिंक नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बट द थिंग इज की योर कंसेप्ट वॉन्ट बी मेड इन 1 month। 365 days है, 20 सब्जेक्ट्स है, ऑन एन एवरेज यू आर गिविंग 18 days। 18 days में क्या कंसेप्ट बनेंगे? आई स्टडीड एंडो फॉर 3 years। कैन यू स्टडी फॉर 18 days एंड मेक like say your concepts are better than mine? You cannot. But if you study these MCQs, I have not studied MCQ, ठीक है, so it might be that you may score better, and this happened. I did not see your GP also, like before my like PG, but in the exam all my endo questions were right and many senior practitioners were wrong, मतलब the guys I knew, मतलब they also secured very good ranks, ठीक है, close to mine only। लेकिन the thing is कि वो मेरी रिवीजन ज्यादा थी, तो they made mistakes। And explanations of MCQ books, academy notes, if you read them na, your 90% is like covered। थोड़ा बहुत रह जाता है, go to standard books, you yourself will understand कि क्या रह गया है। For example, कहीं facial nerve की explanation given है MCQ books में, now you know facial nerve हमसे पूछते हैं और mandibular पूछते हैं, mostly ये पूछते हैं। ठीक है, या ट्राइजेमिनल ले लो ऑन अ होल। तो अगर क्या नाम है, फेशियल की गिवन है, इसकी नहीं गिवन है, गो टू योर एमसीक्यू बुक्स और गो टू योर स्टैंडर्ड बुक्स एंड रीड दिस ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, दिस इज हाउ नोट्स आर मेड, this is how much theory you can do, because see, if you want to, most students have a pharma phobia। फार्मा पढ़ लो 2 months, क्या होगा? उसके नेक्स्ट 3 months जो है, यू विल स्टडी अदर सब्जेक्ट्स। एट 6 month when you start to revise it again, क्या नाम है, कुछ याद नहीं रहेगा। दिस हैपेंड विद मी पर्सनली, आई वाज 25 in AIMS बट स्लिप टू 104, क्योंकि उन 20 days में दिस वाज AIPG नीट, दिस वाज एम्स। ठीक है, ये स्लिप क्यों हुआ? और एम्स वाले रैंकर्स फिर पढ़ना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मेरी उनसे ज्यादा ही थी, अच्छी रैंक थी, क्योंकि ये 20 days में ना मैं प्रोस्तो पढ़ रहा था, सिर्फ प्रोस्तो, मेरी प्रोस्तो वीक है, मैं वही पढ़ता रह गया, अल्टीमेटली ना प्रोस्तो याद हुआ ना बाकी सारे। आई डिड सो स्टूपिड क्वेश्चंस रॉन्ग, लाइक मैक्सिलरी आर्टरी ब्रांच मैंने गलत कर दी, सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट गलत कर दी। ठीक है, एंड दिस इज अगेन वन मोर एग्जांपल कि सिली मिस्टेक्स आर विद एवरीवन, नो नीड टू कर्स योरसेल्फ, सभी करते हैं। ठीक है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 104 रैंक, नॉट इवन 526। ठीक है, 104 रैंक में मैं ये क्वेश्चन गलत करके आऊँ, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच और सॉफ्ट टिश्यू सिस्ट कौन सी होती है, वो ट्रोमेटिक सिस्ट हेमरेजिक सिस्ट होती है ना, ये गलत करके आए हूँ। ठीक है, तो मतलब नेजोलेबियल वाज द आंसर। ठीक है, तो ये मैं गलत करके आया, राइट। तो दिस इज हाउ यू रीड थ्योरी। मोर इम्पोर्टेंट इज योर
MCQ always. If I have the option to cover MCQ 5 times, ठीक है, और थ्योरी बस 3 बार वर्सेस, या थ्योरी सिर्फ 2 बार वर्सेस 3 MCQ एंड 3 थ्योरी, आई विल गो विद दिस। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे MCQ इज योर क्वालिटी, क्वांटिटी की बात नहीं है इसमें, योर MCQ इज द क्वालिटी। देन नंबर ऑफ आवर्स, इट इज अ फ्लॉड कंसेप्ट। ठीक है, एवरी पर्सन इज यूनिक। मेरे जो मेंटर है मुझे कहते थे कि 10 से 12 घंटे पढ़ अंशुल, नहीं तो कुछ नहीं होगा। शी वॉज नॉट रॉन्ग। ठीक है, वो हरसेल्फ शी वॉज आई थिंक रैंक 4 या 5 कुछ ऐसे थे अपने टाइम में। बट द थिंग इज, मैं 7 आवर्स पढ़ता था, आई यूज टू गेट माइग्रेन। तो आई स्टडीड फॉर 5 to 6 hours, आई यूज टू स्टडी डेली। ठीक है, सम कैन अंडरस्टैंड क्विकली बट सम लैक डिसिप्लिन, मेरे में नहीं है डिसिप्लिन। सम टेक टाइम बट दे कैन पुट इन हार्ड वर्क। इफ यू कैन स्टडी फॉर 12 hours, great. But if you cannot, no need to like force yourself. 5 to 6 is minimum required, 6 to 7 is minimum required. This much I'll tell you, इससे कम में नहीं होगा unless you are a genius. If you are a genius, I think you're not watching it. ठीक है, तो 12 hours जो है, लाइक, एंड यू डोंट नो कि वो सामने वाला कैसा पढ़ रहा है। कई स्टूडेंट्स गेट डिप्रेस, यार मैं तो इतना ही पढ़ता हूँ 7-8 घंटे, वो 12 घंटे पढ़ता है। हाउ डू यू नो? वो क्या पता अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा हो बेचारा, है पढ़ाई में दिमाग ही नहीं है। कई लोग म्यूजिक सुनते सुनते करते हैं। तो यू डोंट नो अबाउट देयर क्वालिटी, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, नो वन एल्स। बट अल्टीमेटली हार्ड वर्क विल बीट टैलेंट। आई क्लेम आई एम वेरी एक्सपीरियंस, 7 years का मुझे एक्सपीरियंस है MCQs में, है ना, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। फैक्ट इज, आई डिड नॉट प्रिपेयर इवन फॉर अ सिंगल मिनट, सो देयर आर 525 स्टूडेंट्स who beat me. ठीक है, so again, congratulations to all of you. But there are 525 students who perform better than me because they worked harder. ठीक है, they worked harder. So and they deserve it also. And it is very wishful thinking, काश मैं पढ़ लेता, ये सबके साथ होता है, काश मैं पढ़ लेता और 2 दिन और मिल जाता, ये हो जाता। Reality cannot be changed by desire. ठीक है, again, put in the work and you will get rewards. If you are someone who is religious, trust in God. नास्तिक हो तो बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज ऑल आई कैन से। नाउ गोल्डन रूल, सर पढ़ना कितना है? सी, यू हैव टू रिवाइज 4 times, सेकंड थर्ड रिविजन में ना कुछ याद नहीं रहता वेरी फ्रैंकली। तो स्टडी द अमाउंट विच यू कैन रिवाइज 4 times। अगर 9 महीने तक पढ़ते रहोगे थ्योरी, रिवाइज कब करोगे? तो अकॉर्डिंग टू मी 5 to 6 months फर्स्ट रिविजन, जिसमें यू आर मेकिंग योर नोट्स। ठीक है, 90% ऑफ योर नोट्स शुड बी डन बाय देन। ठीक है, देन सेकेंड रिविजन 3 months। ठीक है, इसमें 95% ऑफ योर नोट शुड बी डन, यानी 4-5% और। देन 2 months इसमें कुछ रह गया हल्का फुल्का 4-5%, ये थर्ड रिविजन। एंड योर फोर्थ वन जिसमें 1 month हेयर, यहाँ से यू डोंट रीड एनीथिंग न्यू। ओनली एक्सेप्शन इज दैट इफ INICET इज कंडक्टेड बिफोर एम्स और बिफोर AIPG, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस यू कैन रीड, वो कई आते हैं। ठीक है, दैट इज द ओनली एक्सेप्शन इफ एनी एग्जाम इज कंडक्टेड, बट अदरवाइज नथिंग न्यू, जस्ट स्टिक टू योर गन्स। एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली इफ यू कैन गिव अ फिफ्थ और सिक्स्थ, वंडरफुल। स्टडी टेक्निक्स, एरर्स मेड बाय स्टूडेंट, नॉट मार्किंग एंड स्टडीइंग ऑल अगेन। ठीक है, वो 6 months 3 months कैसे हो रहा है? एक तो नोट्स आर एलिमिनेटेड प्लस क्वेश्चंस आर एलिमिनेटेड। सी, इफ यू नो, लेट्स से एक्सोडोंशिया हैज 100 क्वेश्चंस, 50 पहली बार में आ गए हैं, 50 नहीं आए। ठीक है, तो द थिंग इज, यू नीड नॉट स्टडी दोज अगेन। एंड ऐसे कर करके यू कैन एलिमिनेट हाफ ऑफ द बुक इन फर्स्ट गो इटसेल्फ। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, ये 6 months लगे, अगली बार 4 months लगेंगे, अगली बार फिर 3.5 लगेंगे, तो रिविजन्स कम रह जाएंगी। एंड दीज क्वेश्चंस ना 98 to 99 हमेशा सही निकलेंगे, 98 to 99%। 1-2% एरर होगा, ठीक है, आई वोंट डिनाई दैट, बट उस 1-2% के लिए ना यू विल एंड अप सैक्रिफाइसिंग दोज क्वेश्चंस जो एक्चुअली नहीं आते। तो फर्स्ट में 50 है, इनको मार्क करो, सेकंड में फिर 30 आएंगे, इनको मार्क करो, अगली बार 20 आएंगे, फिर 10 आएंगे। दैट इज हाउ यू डू इट। ठीक है, दैट इज व्हाई यू गो फ्रॉम 6 to 3 to 2 to 1। बर्डन भी कम लगता है और मतलब मजा भी आता है। डिवोटिंग टू मच टाइम टू अ सिंगल सब्जेक्ट, 18 days का है। ठीक है, ठीक है, DA में तुम 18 days मत दो, 12 दे दो। फार्मा में 18 की जगह 24 दे दो। बट अगर तुम फार्मा को 40 दिन दे दोगे,
बचे डीए के लिए फिर 4-5 दिन बचेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये कॉम्प्रोमाइज होगा, बाकी सारे कॉम्प्रोमाइज होंगे, ठीक है ना। तो डोंट डू दैट। फार्मा मेडिसिन स्पेशली, मेडिसिन तो इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इवन एमबीबीएस गाइस फॉर नीट पीजी हैव सो मच प्रॉब्लम्स। तो अगेन बेसिक्स याद रखो, ज्यादा डीप जाओगे तो 3 ईयर की पीजी होती है, एंड स्टिल दोज गाइस आर लाइक स्टडिंग देयर एस ऑफ। तो थोड़ा कीप दैट इन माइंड, ठीक है। एंड अगेन नॉट कंप्लीटिंग एमसीक्यू ड्यू टू थ्योरी, थ्योरी पढ़ते रह गए 8-9 महीने, एमसीक्यूज ही नहीं किए। कई स्टूडेंट्स होते सर 2-3 सब्जेक्ट रह गए 2-2 महीने पहले, आई फील सो डिसहार्टेंड, अब मैं क्या करूँ। मेकिंग अनरियलिस्टिक schedule and wishing for immediate success. Again, as I said, 4 रिवीजन से पहले कुछ नहीं होगा, तो यू थिंक सेकंड रिवीजन में ही मुझे सब आ जाए, ऐसे नहीं होता। इंस्टेंट सक्सेस नहीं होता, इट टेक्स टाइम। एंड एक पेपर देके डिप्रेस नहीं होना है। माई फर्स्ट नीट रैंक वॉज 500, I think 24 something. फिर I went for 104. It took me 1 year. It took me 2 aims. ठीक है। मैं फर्स्ट एम्स दिया था 3000 आई थी, आई थिंक 2000 आई थी, फिर 1500 आई, फिर 25 आई, फिर एक और दिया था उसमें 280 समथिंग आई थी, तब पढ़ाई छोड़ दी थी। तो देख रहे हो, इट टेक्स टाइम। आई हैव गिवन मेनी पेपर्स, चाहे प्रमोट दो ही करूँ, आई हैव गिवन मेनी पेपर्स, तो इट टेक्स टाइम। एंड डोंट मेक अनरियलिस्टिक स्केड्यूल कि मैं तो पल्स जो है 2 महीने में खत्म कर दूंगा, सर 6 महीने कह रहे हैं, मैं 4 महीने में कर दूंगा, 8 रिवीजन कर दूंगा। ऐसे नहीं होता, फिर वो क्या होता है, यू गेट डिप्रेस। ठीक है, ये मैं बहुत करता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, अरे यार भाड़ में गई सब, वेब सीरीज देखेंगे, गाने सुनेंगे, बढ़िया पार्टी करेंगे। ठीक है, डोंट डू दैट, गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। ठीक है, इट्स टफ टू स्टडी। So lastly, I come to my group recapitulation. I launched a series earlier and it was quite successful. I received very good response. I was able to help students. I'm very proud to say that. Okay. So in this, I give you constant personal guidance. Okay. It is starting from your May 20th, as soon as INICT ends. Because according to me, I know most of you must be confused right now regarding counseling, etc. But the thing is कि if you wait for 3-4 months, you will end up wasting precious time. तब फिर 6 महीने रहेंगे, अभी you have it, मतलब you have good amount of time, है ना, 10-11 months minimum है. The best time to start is yesterday, and the next best time is today. Always start earlier. You get constant personal guidance from me, professional, personal, जो बच्चों को पूछना होते थे, talk to me for hours, no issues. And I analyze how you are attempting paper. It's not just that paper दे दिया attempt करो, नहीं. I ask you to send me the marks and I analyze क्या गलत कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितने टाइम में क्या कैसे, सब करता हूँ. And it is obviously self study के लिए तो ये बहुत ideal है. But even if you are in academies, see, you get exposure to different questions because every academy has its question bank. Okay. Plus, I'll tell you how to better use your academy. Some students say, I'm already in an academy, you want to join. So it will not be a burden, but it will help you to better use your academy. That I'll tell. Okay. वो मैं बता दूंगा, and you will be able to, perform better. So there is a free group, obviously. Okay. Apart from that, the series guys, they get 2000 additional questions. Okay. Basically, 100 mark, you can say, test of each subject. Okay. These are different from the free group questions. Then you get access to my last moment test series, वो जो 3 months की है, of 1500 question. नीट पैटर्न के 240 into 640 1440 बनते हैं. These are again different from this and this. And your INICT test series of 1100 question, this is again different. So you get a 6000 question bank. ठीक है, रिपीटेड नहीं होते. ठीक है, आई टेक अटमोस्ट केयर. ह्यूमन एरर कुछ हो सकता है, अलग है. ठीक है, बट रिपीटेड नहीं होते, ये सारे डिफरेंट क्वेश्चंस है. एंड आई डू नॉट पुट वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ठीक है, दिस इज नॉट टू डीमोटिवेट यू, बट आई थिंक दैट आई शुड पुट गुड क्वेश्चंस. देयर इज नो यूज ऑफ पुटिंग क्वेश्चंस लाइक विच इज द सेवंथ cranial nerve. That is just wasting a question which you can practice. I'll put like it's better to put कि हाँ उसकी ब्रांच कौन सी है, क्या कैसी है. ठीक है, the solutions remain till need. कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एक दिन में, मतलब एक दिन में ही करना है, उसी दिन करना है, कभी करना है कभी कर दो. इफ यू सब्सक्राइब इन लेट्स से जून, यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, योर विश. मेरी तरफ से सब मिल जाता है. ठीक है, एंड दे रिमेन टिल नीड. जब भी उसकी डेट आती है, यू कैन एनरोल एनी टाइम एंड यू गेट फुल एक्सेस. ऐसा नहीं है यू कम इन सितंबर देन यू गेट हाफ.
सारा का सारा मिलेगा, ठीक है। बट अगेन द अर्लियर यू स्टार्ट, द मोर टाइम यू हैव एंड द मोर आई कैन गाइड यू, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ दिस इज अराउंड 2500, ठीक है। तो इन 2500 यू आर गेटिंग अ कांस्टेंट, you are getting constant personal guidance, ठीक है, and you are getting 6,000 questions. In free group there are around 50, there are 2,000 actually, 1,500 से ज़्यादा ही हो जाते हैं. And the guidance is only via like these kind of webinars or voice notes. I try to motivate my students, but definitely I cannot deal with every student on a personal level. But test series वालों को I take under my wing and I, like, to the best of my abilities I try to guide. ठीक है. So this was all from my side. Thank you very much for your patient listening. And second part again, it's live in my group. The link is posted below. Okay. So thank you very much, guys.